United we stand. Once four bulls lived together in a field. एक समय एक मैदान में 4 बैल रहते थे. There was plenty of grass for them. उन लोगों को खाने के लिए बहुत से घास थे. They used to feed on fresh grass and they were living happily. वे लोग ताज़ा घास खाते थे और खुशीपूर्वक रहते थे. All the animals were afraid of them. सभी जानवर उन लोगों से डरते थे. No one dared to fight with them as they always kept together. वे हम एक साथ रहते थे इसलिए किसी को उनसे लड़ने का साहस नहीं होता था. The lion also kept away from them as he knew. शेर भी यह बात जानता था और उनसे दूर रहता था. If he was to fight with one, he would have to fight with all the four. उसे एक से लड़ने पर चारों से लड़ना पड़ता था. Whenever the bull sensed danger, जब बैल खतरा महसूस करते थे, they started bellowing. वे गरजना शुरू करते थे. One day the lion thought of a plan to kill the bulls. एक दिन शेर ने बैलों को मारने के लिए एक योजना सोचा. First he went to one of the bulls and said. सबसे पहले एक बैल के पास गया और बोला, The other bulls get more grass than you. दूसरे बैल तुमसे ज़्यादा घास खाते हैं. This is not right. यह बात सही नहीं है. The lion went round and said this into the ear of each of the 4 bulls. इस तरह से शेर सभी चारों के पास गया और इस बात को बताया. He was very happy with the trick he had played. वह अपने इस ट्रिक से काफ़ी खुश था. Now I think their unity will not last long. शेर ने सोचा अब उनकी एकता नहीं रहेगी. They will soon quarrel. वे जल्दी ही झगड़ा करेंगे. With one another. वे जल्द ही एक दूसरे से झगड़ा करेंगे. And I will be able to kill them one by one. और मैं एक एक करके उन लोगों को मार सकता हूँ. मैं एक एक करके उन लोगों को मारूंगा. It all happened the same as the lion thought. जैसा शेर ने सोचा था वैसा ही हुआ. Each bull thought that the others got more grass than he himself. प्रत्येक बैल ने सोचा कि बाकी लोग मुझसे ज़्यादा घास खा रहे हैं. The bulls did not trust one another. बैल एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दिए. So they no longer kept together. इसलिए वे एक साथ नहीं रहते थे. And each went away by himself. और प्रत्येक एक दूसरे से दूर चले गए. This was what the lion wished. शेर ऐसा ही चाहता था. One day he got the chance and sprang upon one bull and ate him. एक दिन वह मौका पाया और एक बैल पर उछला. The other bulls did not come to help. The other bulls did not come to his help. दूसरे बैल उसका मदद के लिए नहीं आए. Next week the lion pounced another bull and ate him. दूसरे सप्ताह शेर दूसरे बैल पर झपटा और उसको खाया.
Again the other two bulls did not come to help their friend. पर भी दूसरे बैल मदद करने के लिए नहीं आए. After a few days the lion again visited the field. कुछ दिन के बाद शेर उस मैदान में आया. As soon as he got the chance, he jumped upon the third bull and ate him too. जैसे ही वह मौका पाया, वह दूसरे पर झपटा, वह तीसरे बैल पर झपटा और उसको खा गया. Now only one bull was left. अब सिर्फ एक ही बैल बच गया था. I'll eat whole grass. I need not share it with anyone. laughed the bull. बैल ने हंसा और कहा, अब मैं सारा घास स्वयं खाऊंगा. But his happiness did not last long. किंतु उसका यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चला. One day when he was grazing in the field, एक दिन जब वह घास चर रहा था, the lion came and sprang upon the last bull. शेर आया और अंतिम बैल पर उछला. He tore him to pieces and ate him. वह उसे टुकड़े टुकड़ों में फाड़ डाला and ate him और उसको खा गया. All the bulls died one by one because they were no longer united. वे एक एक करके मारे गए. It is very well. यह कहावत है, United we stand and divided we fall. सभी बैलों में यूनिटी नहीं थी, इसीलिए अगर हम एकता में रहेंगे तो आगे बढ़. फॉल. अगर टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो गिर जाएंगे, हम लोगों का पतन हो जाएगा. Answer the following questions. Why did anyone not fight with them? Answer. Anyone not fight with them as they always kept together. Question number 2. What was the plan of the lion? Answer. The lion planned to break their unity. Question number 3. What did the lion say into the ear of each of 4 bulls? Lion went to one of the bulls and said, the other bulls get more grass than you. This is not right. 4th. How did the lion kill each of the 4 bulls? Answer. The lion shows enmity between them so that they separate, and he is able to kill them one by one. Question number 5th. What is the moral of the story? Answer. The moral of the story is united we stand and divided we fall. The blanks using the words given below. इन शब्दों द्वारा खाली जगहों को भरो. First, the 4 bulls lived together in a field. No one to fight with them. 3. Whenever they sensed danger, they started bellowing. 4th. The bulls did not trust one another. 5th. United we stand, divided we fall. 3. Write T for true and A for false. The grass was not enough for the bulls. यह गलत है, F लिखेंगे. Second, the 4 bulls always kept together. यह सही है तो T लिखेंगे. Third, the lion could not kill a single bull. यह false है तो यहाँ पर false लिखेंगे. Unity is a strength. यह सही है तो T लिखेंगे.